find out whatever you're good at. Maybe you love singing, maybe you love dancing, maybe you love to talk with people like me. उसी को आप nurture कीजिए. When you have passion in your work, you will have your peace of mind and you can sleep well at night. Do something which gives you happiness and that will turn out to be your success. I was very passionate about fashion. But the thing is, सिर्फ पैशन से चीजें नहीं होती हैं, जिसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था और इस वजह से आई गॉट फेल. आपको बहुत अदर चीजें भी जाननी चाहिए. आपका जो पैशन है क्या वो मोनेटाइज हो पाएगा? आपका जो पैशन है क्या आप रेडी हो उसको करने के लिए? जर्नल टर्मिनोलॉजी में लोगों को लगता है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होने का मतलब ये है कि आप अच्छी इंग्लिश बोल सके. एंड दूसरा, क्या कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना होता है? We should be knowing our mother tongue very well. But the thing is that आप कोई भी इंटरव्यू में अगर जाते हो, the mother tongue is not going to work for you. So which is why अगर आप communicating in English भी सीख जाते हो हिंदी के साथ, that is an added advantage to move ahead in career. The main idea of communication is to So दोस्तों, वेलकम टू पूजा टॉक शो, वन मोर न्यू एपिसोड. और आज का हमारा एपिसोड है एक कम्युनिकेशन कोच के साथ. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ. हाउ वी कैन डील विद इट, हाउ वी कैन एनहांस इट एंड व्हाट आर द थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम इट. यही हम सीखेंगे हमारे आज के एपिसोड में. सो आज हमारे जो साथ हमारे गेस्ट हैं वो हैं प्रियंका. शी इज़ एन कम्युनिकेशन कोच. तो बहुत ही अमेजिंग शो होने वाला है, सो बने रहिए हमारे साथ. वेलकम टू पूजा टॉक शो. प्रियंका, हाउ आर यू? I am fantastic. Thank you so much for having me here. The pleasure is all mine that you gave me the opportunity to come and speak up on your show. So the pleasure is all mine. Thank you so much. So थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट. और इतने शॉर्ट नोटिस पे मैंने आपको इन्फॉर्म किया एंड यू एक्सेप्टेड. थैंक यू फॉर दैट. आज हम बहुत ज्यादा एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, आज हम थोड़ी मस्ती करेंगे यहाँ पे और हम प्रियंका का अदर साइड भी देखेंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि कैसे शुरू हुआ ये सब. तो प्रियंका बताइए, हम आपकी जर्नी में भी, आपकी ऑडियंस तो जानती होगी आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, लेकिन हमारी ऑडियंस नहीं जानती आपकी जर्नी के बारे में. थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से हो और कैसे स्टार्ट हुआ ये सब. क्या आप कोच ही बनना चाहते थे पहले से? जैसे लोगों का ड्रीम होता है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है. तो क्या ये आप पहले से बनना चाहते थे या डेस्टिनी आपको यहाँ लेके आई? All right. Very good question, Pooja. And जब भी मैं कोई शो में जाती हूँ, तो this is the most commonly asked question. So I'm sure the audience is going to love it. How my journey started, कैसे सब चालू हुआ and everything. First and foremost, nothing was destined. Okay, I made it to my destiny. ठीक है. I was into corporate sector throughout. I had been working with Wipro, IBM, TCS as an HR, as a trainer, as a lead trainer, manager, in different roles and positions, because as you see, I have more than 10 plus years of experience, right? So I have spent almost, majorly of my career in corporate sector. The thought अचानक से ना, I wanted to do something, not अचानक से, there was always a wish actually कि कुछ करूं. Corporate life में अगर आप जाते हो तो obviously your zone is limited to few people, maybe thousands, 5,000, 10,000, but what about the bigger world, the bigger aspects of life, right? So I always wanted to do something to influence others, so that I could impart my education, my learnings, my experience and share it with others, right? So as a matter of fact, मैंने decide किया कि I'll leave on the corporate thing and I will start teaching. ठीक है? So what I'll start teaching? Communication. That is the most essential and basic thing of any human being. When we are born, when a baby is born, हम लोग पहले क्या बोलते हैं? Maybe the first word that we use is माँ,
That is also by speaking. We need to speak it up through our mouth. So you talk about anything. You talk about job. You talk about student getting admissions. You talk about business cracking a deal. है ना? कोई relationship में हो गया कोई problem. You sort it out with your spoken skills and everything. Everywhere. Good sales also. You need communication. So that is the most essential and basic thing. So मैंने सोचा कि public speaking and communication is going to impact a lot into people's life. So why not to preach that? If I am able to turn at least few of the world's population, giving my experience and enhancing everything, so why not? So this is how I quit my job. In 2021 October, I still remember that was the last time, those were the last days in TCS. My TCS was my last company. Uske baad se coaching and all, and there was no looking back. So things started like this, and by God's grace, I'm doing well. So obviously, और भी कोशिश करूंगी कि आगे चलता रहे and everything goes and falls in place. I am able to impact a lot of people. So this is how it all started. Wow, amazing journey, Priyanka. It is, and definitely you are doing great. Or I checked out your page and I loved it. और शायद आपका पेज ही चेकआउट करते करते मैं आपसे कनेक्ट हुई एंड इट वाज वेरी, मतलब जिस तरह से आप हर चीज बताते हो सिखाते हो, इट्स रियली वेरी इंफॉर्मेशनल एंड वेरी लाइफ चेंजिंग. सो प्रियंका, बचपन से, माय प्लेजर. सो प्रियंका, जैसे बचपन से या फिर हमेशा आपने सुना होगा, हम कुछ भी जब करते हैं तो इवन दो मूवीज में या फिर जनरली भी हम कहते हैं ना, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा जब सक्सेस मिलेगी हमको, एक दिन सब ठीक हो जाएगा जब सक्सेस मिलेगी हमें. इवन दो हम मूवीज में भी देखते हैं, जब किसी की स्टोरी दिखाते हैं, वो स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है और सडनली मिलेनियर बन जाता है एंड ये वो. तो वैसे तो सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है, सबकी अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन फिर भी मतलब कॉमनली, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत यंग ऑडियंस है, ठीक है, यंग प्रोफेशनल्स हैं, तो एक यंग प्रोफेशनल के लिए या फिर मतलब जनरल टर्म में अगर बोले तो सक्सेस क्या होती है, मतलब आप कैसे डिफाइन करोगे सक्सेस क्या होती है? एंड आई लव योर क्वेश्चन, पूजा. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सक्सेस? ये जो वर्ड है ना, दैट डिफाइंस एंड मीन्स टू डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग्स. फॉर मी, मैं अगर सजेशन देना चाहती हूँ तो मतलब फॉर द यंगर क्राउड, ऑब्वियसली दोज हु आर वाचिंग, दोज हु आर इनटू मेकिंग देयर करियर, मे बी दे आर सीकिंग जॉब्स एंड एवरीथिंग, एक ही चीज बोलूंगी. First thing, when you want to develop your career, first of all, niche down your activity, what you are best at. Do not be jack of all trade and master of none. That is one of the major things that we majorly do. We keep on trying and hustling a lot of things. ठीक है, maybe for some time it is required to try out our luck, but at one point of time, maybe even if you're 24, 25 or 20, 22, 23, right after your college, आप देखो आपका पैशन किस में है, where is your passion, where does your passion lies. I still now feel, regret myself also that why did I waste so much of time into corporate, because my passion was always into communication. I should have started it. So definitely I want to tell you that you find out whatever you're good at. Maybe you love singing, maybe you love dancing, maybe you love to talk with people like me, you want to interact with people more, or anything. Maybe you're good at sales. So usi ko aap nurture kijiye. So if I conclude in short terms, make the definition of success is
passion. When you have passion in your work, you will have your peace of mind and you can sleep well at night. That is the most important thing. If you do not enjoy your work, obviously, no matter अगर आप बहुत पैसा भी कमाते हो and everything, you cannot sleep good at night. So that means you're not happy. We are living into this world for what? Obviously, we want to be peaceful, we want to be happy. So do something which gives you happiness, and that will turn out to be your success. That is what I will say the definition of success. राइट, एब्सोल्युटली राइट प्रियंका. सो आपने पैशन की बात करी है, तो जैसे कि आजकल हम बात करते हैं और ये मतलब शायद ये टर्मिनोलॉजी जो है बहुत ज्यादा हम यूज भी कर रहे हैं आजकल, क्योंकि पैशन के अराउंड काफी सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो रन हो रही हैं, लेकिन फिर भी इसी के साथ साथ एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि एक पर्सन है वो कैसे फाइंड आउट करे कि मतलब कि जाना चाहिए या पैशन, मेरा पैशन क्या है. मतलब फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो पेंटिंग भी बहुत अच्छी करता है, बात भी बहुत अच्छी करता है, दोनों ही काम करना उसे पसंद है, तो वो कैसे फाइंड आउट करे कि रियल पैशन क्या है उसका, और क्या सिर्फ पैशनेट होना काफी है किसी भी एक सक्सेसफुल बिजनेस या करियर को चलाने के लिए. बिकॉज पैशन डेफिनेटली जो काम आप कर रहे हो, यू शुड गेट द हैप्पीनेस और आपको अच्छा लगना चाहिए, लेकिन उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज होंगी. क्योंकि इफ आई विल टेल यू माई स्टोरी, आई एम अ पैशनेट अबाउट क्लोथ्स, you can say that's my passion. Okay, the first thing. That second is I love talking. The second passion is that. So 5 years, 7 years back, I quit my job and I started exploring the things, and I started my startup. Okay, it was an e-commerce store around the fashion. But the thing is, I was very passionate about clothing, I was very passionate about fashion, but the thing is, सिर्फ पैशन से चीजें नहीं होती है. कई बार आपको बहुत सारी अदर चीजें भी करनी पड़ती है. ओके, जिसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था और इस वजह से आई गॉट फेल. उसके बाद आई रीस्किल्ड माई सेल्फ, और फिर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि पैशनेट होना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत अदर चीजें भी जाननी चाहिए. आपका जो पैशन है, क्या वो मोनेटाइज हो पाएगा? आपका जो पैशन है, क्या आप रेडी हो उसको करने के लिए? और जब भी आप पैशन चुनते भी हो, इवन दो, तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग जॉब इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें किसी के अंडर काम नहीं करना है. ये भी एक थॉट प्रोसेस होता है लोगों का. वो कहते हैं कि नो, आई डोंट वांट टू डू 9 to 5, दैट्स व्हाट आई वांट टू क्रिएट माय बिजनेस. तो ये जो एक डायलेमा होता है, वो उनको बहुत ज्यादा, वो फेल होते हैं बाद में, और उनको बहुत प्रॉब्लम होती है. तो ये चीज क्योंकि बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है. तो क्योंकि आपने अपना कॉर्पोरेट करियर किया, उसके बाद आप सक्सेसफुली अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, तो थोड़ा सा गाइडेंस अगर आप हमारे यंग प्रोफेशनल्स को दोगे इसके बारे में कि कैसे, पैशन तो है, ठीक है, पहले तो पैशन आप जानोगे कैसे, और कौन कौन सी चीजें हैं जो पैशन के साथ आपको जाननी जरूरी है, सो दैट यू कैन रन अ सक्सेसफुल बिजनेस. Okay, all right. Very valid question and very interesting question. First thing, आप जो पूछ रहे हो कि पैशन को हम लोग, बहुत सारे पैशन हो सकते हैं. कोई बंदा 4 या 5 चीजों में भी बहुत अच्छे हो सकता है. Now, how would you find out that is the ultimate thing which you want to do is, if you're not tired of anything and you can keep on doing the same thing hours and hours, like I can keep on talking for hours and hours, I don't get tired. So somebody who loves dancing or somebody who loves maybe painting, if they can do for hours and hours, that is passion and that is what you need to niche down. आप कोई भी चीज में अगर टायर्ड नहीं होते हो, that is your passion because you're enjoying that work. A person cannot work throughout, मतलब अगर वो, if he is not enjoying that thing, so that is how you're going to niche down your passion.
Second is the one that you asked me, that how did, like, obviously that's a very good point. Passion, if that cannot be monetized, that is not fruitful, because ultimately at the end of the day we all work for money. People might say a lot of things, hey, I don't want money and this, that, have a lot of things about myth about money. But at the end of the day, we need to run our family. We need to look up and do our own stuff. And how can we do it if we are not earning, right? Now, people, I would say that you need to chalk out a plan. That is how even the corporates, we teach DMAIC, right? That is a Six Sigma process. That is, how do you plan your stuff? How do you execute your things? So before entering into anything, supposingly I'm telling you, let's say for an example, कोई अगर आप कॉलेज में हो, उसके बाद आप करियर चूज करते हो, उसके पहले से कि मेरे को बंदा को इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है, उस हिसाब से बंदा प्रिपेयर करता रहता है। कैट मैट एमबीए के लिए हो गया, मेडिकल के लिए हो गया दूसरा, इंजीनियरिंग के लिए हो गया दूसरा। Similarly, if you want to turn out your passion into monetization, they need to plan out things so that that business becomes a byproduct. आप साइड में उसके लिए फंड्स जमा करते रहे। आप कैसे करोगे? Maybe you are from a very humble background, like me, maybe. आपने कैसे, आप अचानक से जॉब भी नहीं छोड़ सकते, आपको जॉब भी करना है क्योंकि अचानक से आपके पास उतना कैपिटल भी नहीं है, आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ भी नहीं सकते हो। हाउ डू यू मेक इट? You can start, first of all, grooming up, skilling up yourself, that how can you execute your entrepreneurship journey. That is very important. ठीक है? आप side by side part-time job भी कर सकते हो initially. And people, Pooja, like the way she mentioned that a lot of people, they don't want to work under people. ठीक है ना? 9 to 5 job नहीं करना, वो नहीं करना. Everything, any small thing you do in life, any work, no work is a small work. I would tell you this thing. If you are flexible in life, if you are ready to, if your vision is clear, mission is clear, कि नहीं, your goal बहुत दूर तक है, आपका लक्ष्य अगर क्लियर है, तो आप किसी भी तरह, by hook or by crook, you will make it to that point, so that आप वो चीज के लिए प्रिपेयर हो, and then you turn out your passion into monetization. Honestly, Pooja, I'll tell you, I did not have, since I am from background of my dad was also into job. I'm not from any business family, so that the entrepreneurship, that thing influenced me. Obviously not. I made my own ways. What I did my work. I actually worked in the corporate sector. I had my savings. I had a good thing. I made a plan side by side. No, now I want to turn it out into a bigger scale. I want to do my entrepreneurship. I planned it out. So I am telling you, it could be possible कि आपका passion उतना जल्दी monetization नहीं हो सकता. तो उसके पहले जो preparation लेना है, आप job कर लीजिए कुछ देर के लिए, या तो skill up, groom up, so that you can network with people, channelize things, and definitely you can turn your passion into monetizing. But yes, your focus and mission should be clear. That is what I can see. Right? Wow. Amazing answer, Priyanka. तो डेफिनेटली पैशन के साथ साथ सबसे पहले तो पैशन होना जरूरी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों करना चाहते हैं. द व्हाई थिंग इज क्लियर, क्योंकि जब आपको वो पता होगा तो चीजें करनी थोड़ी इजी हो जाएगी. क्योंकि मतलब जैसे आपने बताया कि कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है. आपको पैसा कमाना है, डेफिनेटली आप पैसा कमाने के का भी विजन रख सकते हैं कि यू वांट टू मेक मनी फर्स्ट. ओके, तो आपको पता चलेगा कि पैसे भी कमाने हैं, तो कितने पैसे कमाने हैं, कब तक कमाने हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. और उन पैसों का आप करेंगे क्या, आप री इन्वेस्ट करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी, आप प्लान इट आउट करोगे, तो प्रैक्टिकली 50% वो चीज हो पाएगी. तो सबसे पहले
ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, जैसा प्रियंका ने बताया, और आप वो क्यों करना चाह रहे हो। तो जब आप ये क्लियर करोगे तो शायद रास्ते थोड़े से इजी हो जाएंगे। डायरेक्शन एक धुंधली सी डायरेक्शन नहीं, कम से कम थोड़ा सा तो रास्ता दिखाई देगा। उसके बाद तो हमें चलते चलते पता ही चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। सो वेरी बेस्ट, नाइस आंसर प्रियंका। तो बात करते हैं कम्युनिकेशन की। आप कम्युनिकेशन कोच हो, कम्युनिकेशन सिखाते हो बहुत सारे लोगों को। तो जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, जनरली यंग प्रोफेशनल्स होते हैं या मिड मैनेजर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हम कोई सेल्स वाले थोड़ी हैं, हमें कम्युनिकेशन पे काम करने की क्या जरूरत है, बात करना आता है हमें। तो आज वैसे तो मैं बात करती हूँ इस पे, लेकिन आप क्योंकि उस चीज के ही एक्सपर्ट हो, तो क्या कम्युनिकेशन का मतलब, पहली दो चीज पूछूंगी। एक तो कम्युनिकेशन स्किल की बात जब हम इंडिया में करते हैं तो उसका मतलब अच्छी इंग्लिश होता है जनरली। ओके, जनरल टर्मिनोलॉजी में लोगों को लगता है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होने का मतलब ये है कि आप अच्छी इंग्लिश बोल सके। ओके, तो एंड दूसरा, क्या कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना होता है? मतलब क्या हम बोल पा रहे हैं अच्छा, दैट इज ओनली द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? ये दोनों चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे प्रियंका। Very, very good question, Pooja. Again, first of all, I'm very impressed with all your questions because मैं अच्छे से explain भी कर पा रही हूँ and actually it's speaking out my heart out ना, है ना? Now, people, हाँ, हम लोग के इंडिया में this is a myth that in anybody जो इंग्लिश में अच्छा बोल लेता है, he or she is good in communication. So that's a wrong thing, people. Let me clarify that. We being Indian, we should be knowing our mother tongue very well. We should be knowing our national language very well. But the thing is that क्यों इसको वैसे बोलते हैं? Why the projection is that? मैं क्लियर करना चाहूंगी। आप कोई भी इंटरव्यू में अगर जाते हो, या तो बच्चे को कोई स्कूल में लेके जाते हैं एडमिशन के लिए, या तो आप कोई हायर स्टडीज के लिए कॉलेज में जाते हो, ग्रुप डिस्कशन में बैठते हो, या तो आप कोई इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बिजनेस कर रहे हो, द मदर टंग इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, राइट? वी नीड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सो विच इज वाई अगर आप कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश भी सीख जाते हो हिंदी के साथ, या आपका जो भी मदर टंग है, दैट इज एन एडेड एडवांटेज। दैट इज एन एडेड एडवांटेज फॉर यू टू मूव अहेड इन करियर। बट अगर एक बंदी और या बंदा बहुत अच्छा हिंदी में बात करते हैं एंड दे आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, obviously he or she is a very good in communication. That is absolutely the main idea of communication, is to pass on your idea to the other person. कि बंदे के पास आपका जो मैसेज है वो जा रहा है या नहीं। Whether are you able to, मतलब are you able to put that thing, आपका जो mindset है, या तो आपका जो thought process है, if you're able to interchange that thought process to the other person successfully, that is the meaning of communication. So obviously, and communication is not only about speaking people. आप अगर अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, सबसे पहले आप अच्छा सुनना भी सीखना चाहिए आपको। You need to be a very, very good listener, people. Because अगर आप listen नहीं कर सकते हो, you cannot answer the other person's question also, right? For example, like the way Pooja is asking and explaining it so well, है ना? So obviously I'm listening to her with full attention and I'm trying to give my answers, right? अगर मैं उसको सुनती ही नहीं, so obviously I could not have been able to answer her properly. So very basic things. We need to listen very well. There are many elements of communication. To keep it short, listening is very, very important. And obviously your eye contact, your body language, everything, how you present yourself. आप कुछ भी पहने हो doesn't matter, but the way you speak, it matters. The way you're confident, that matters. So that is what, and that is why communication is so very important.
आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कम्युनिकेशन ग्रूम कीजिए, so that you are able to express your thoughts to the other person and influence other people. राइट। एंड कम्युनिकेशन, जैसे बोला, कम्युनिकेशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मतलब कई तरह की कम्युनिकेशन होती है। जैसे कम्युनिकेशन के पार्ट बताए प्रियंका ने, वैसे ही एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसमें बहुत सारी चीज आ जाती है, बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। एंड वन मोर बिगेस्ट पार्ट जिसमें मैं डील करती हूँ, इट्स लाइक योर एंटायर इमेज, जिसमें अपीयरेंस आ जाती है आपकी, द वे यू प्रेजेंट, योर साइलेंट वे, साइलेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आप कुछ बोलते नहीं है, बट योर जेस्चर्स, द वे यू आर बिहेविंग, द वे योर मैनर्स। ओके, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप सिर्फ चीजें कर रहे हैं और उससे ही आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम उस चीजों को जाने समझें, बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और शायद मुझे ऐसा लगता है प्रियंका, क्योंकि हम बचपन से, जब से हम बोलना स्टार्ट करते हैं, हम बोलने लगते हैं, कम्युनिकेट करने लगते हैं, और वो हमारी लाइफ का एक इतना अहम हिस्सा हो जाता है। हमारी लाइफ शायद उसके बिना हम रह भी नहीं पाते। इस वजह से हम उस इम्पोर्टेंट फैक्टर को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि इट्स जैसे कि हम जब सांस लेते हैं, सांस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शायद उसके बिना हमारी लाइफ संभव ही नहीं है, राइट, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो हमारे लिए एक इतना इनवॉलेंट्री एक्शन हो चुका है कि हमें उसकी कीमत पता नहीं होती है, राइट। कि एक जो हमारी जो हम ब्रेथिंग एक्सरसाइज करते हैं योगा में, उसमें हमें मतलब बताया जाता है कि एक आप लंबी सांसें लीजिए, फिर उसको आराम से छोड़िए, तो उससे क्या फायदा होता है। लेकिन हम इतने बिजी हो जाते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि बचपन से हम वो चीज रेगुलरली करते आ रहे हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, राइट। इसी तरह कम्युनिकेशन भी है, क्योंकि हम बचपन से ही बात करते आ रहे हैं, आसपास कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें ये रियलाइज नहीं हो पाता है कि हमें इस पे काम करना क्यों है, हमें इस पे बहुत अच्छे से काम करना जरूरी क्यों है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब हम इस पे काम करना शुरू करते हैं तो हमें इसका इम्पैक्ट पता चलने लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है और कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे याद है आज से 2 साल की पहले की बात है, एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। मैं लोगों को ईमेल जनरली लिखती हूँ, जिनके पास ऐसे रीच आउट कर पाती हूँ, ऐसे नहीं तो ईमेल के थ्रू लिखती हूँ। तो उसमें मैंने किसी स्पीकर को लिखा था एंड अपने शो में बुलाने के लिए, और वो डेफिनेटली शी केम टू माय शो। हम बहुत ही अच्छा एपिसोड हुआ, बट उन्होंने मुझे एक फीडबैक दिया था मेरी ईमेल पे। तो मैं हमेशा ये लिखती थी उनको कि आई वुड लाइक टू इनवाइट यू इन माय शो, ऐसा। तो कोई किसी का को लिख रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप इसकी जगह एक सेंटेंस चेंज कर दोगे तो आई बेट यू नोबडी कैन से नो टू यू, ओके, एवरीबडी लव टू डू दैट। और उन्होंने बोला कि आप इसकी जगह ये लिखो कि आई वुड बी ऑनर टू हैव यू ऑन माई शो, ओके, जस्ट चेंज दिस लाइन। एंड ट्रस्ट मी, जब से मैंने वो लाइन डाली है अपनी ईमेल में, मुझे 80% लोगों के यस मिलते हैं। सो आई हैव सीन द मैजिक ऑफ द वर्ड्स, कि कैसे ये रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं पहले बोल रही थी वो कोई अनरिस्पेक्टेबल एकदम बेकार सी बात थी या बहुत ही भद्दे तरीके से मैंने बोली थी, ऐसा नहीं था। लेकिन जो चीज दोबारा बोली गई थी वो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल थी, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा। तो तब से मुझे रियलाइज हुआ कि वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं और ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा। सो आई रियलाइज कि कितना मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है और अनकॉन्शियसली लोगों को हिट करता है, जो कि हमें पता नहीं चलता है। सो वेल सेड प्रियंका, आपने बहुत ही सही बात बोली है कि हमें इसकी जरूरत है। तो हमारे जो यंग प्रोफेशनल हैं, जो अभी अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, ठीक है, तो आप उनको क्या 5 एडवाइस देना चाहोगे कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, जो कि उनको उनके करियर में ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, उनके कॉर्पोरेट कल्चर में उन्हें अडेप्ट करने में ग्रो कर सकती है। तो कौन सी 5 एडवाइस आप उन्हें देना चाहोगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर आप कोई भी चीज को
पहले ही माइंड ब्लॉकेज आपको हटाना है, ठीक है? माइंड ब्लॉकेज कोई भी चीज को लेके, नॉट ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ भी आप मेजरली द मेजर प्रॉब्लम व्हाट पीपल हैज इज मेरे से नहीं होगा, आई कैन नॉट डू इट. सो फर्स्ट किल योर लिमिटिंग बिलीव्स. पहले उसको किल कीजिए. यू कैन डू इट, फील दैट, राइट? बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ. इट डजंट मैटर कहाँ से हो, हाउ यू लुक, व्हाट इज योर एजुकेशन. व्हेन अभी पहले हम लोग के लाइक यू नो व्हेन वी वर इनटू कॉलेजेस एंड ऑल, वी डिड नॉट हैव अ फैसिलिटी एट ऑल टू लर्न फ्रॉम समबडी. अभी हम लोग इंस्टाग्राम में भी कितना फ्री सीख सकते हैं, राइट? Go through the contents of people, those who can influence you. जो आपका skill में you feel that no, you need to develop that skill. Follow those people, learn from them, and start to skill up. Third, daily practice. Just bring out 15 minutes from your 24 hours. कोई भी चीज को लेके आप प्रैक्टिस करो. मोबाइल फोन हो गया, या तो लाइक यू नो मे बी कैलकुलेटर हो गया, एनीथिंग, इट डजंट मैटर व्हाट यू आर स्पीकिंग ऑन. एनी इम्प्रॉम्प्टू, आप कोई भी चीज लेके एटलीस्ट ट्राई टू मेक 10 sentences about the phone. Maybe this phone has a very good camera, you know, the battery longevity is very good. कुछ भी खुद से बात करो. And people, one more thing, you will never get people to practice majorly until you are a part of any community or group from where you're learning. So it is very important कि आप self talk कीजिए, mirror के सामने self talk कीजिए. Just 15 to 20 minutes a day, and believe me, it's going to help you like anything. Okay, now fourth is listen to good podcast. English podcast देखिए, English movies देखिए, books पढ़िए. You can enhance your vocabulary, you can develop your listening skills, and you can understand the accent of people also. हम लोग बहुत टाइम accent भी नहीं समझ में आता, जो कि आपको English movies देखने में like you know it can actually help you. And believe me, even I did it. I still keep on doing it and groom myself because I believe that there's no end to learning. अब कोई भी स्टेज में हो, आप किसी ना किसी से सीखते रहना चाहिए, right? So that is very, very important, people. And last but not the least, interact with people. Talk with strangers. It would help you to bring out the extrovertness in you. अगर आप shy हो, introvert हो, आप किसी से interact कीजिए, unknown people से. Obviously productive thing, not hi, hello, how is your day going, वैसा नहीं. Productive बात कीजिए. Follow people, those who can give you some good advices, good learnings. आप जिसके पेज से कुछ सीख सकते हो and all that, you know. So interact with people. That would also boost up your confidence. And also, I would like to add on another one. You know, speaking के साथ हम लोग लिखना भी अगर like you know if we can do it, we can if we can write at least one paragraph a day. Now, people most of the time my mentees ask, what would I write? What would I write? You write your basic daily routine. I woke up at 8 a.m. Then I had my breakfast. Simple, short and crisp sentences. Write down paragraph, people. आप जब लिखना चालू करोगे ना, it would help you to think also. It would help you to speak also. You can develop on those lines also. So this is how you can initially start. Do these activities for 15 days or a month and you're good to go. Believe me. At least you will see a major difference in yourself. है ना? और बाकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग एंड एवरीथिंग के लिए पूजा मैम है, जो कि आपको बता सकते हैं. So she is a masterpiece in that. So no doubt about it.
And you can follow her page. So obviously, you guys, those who are there, so you follow her, which is why you're watching me also. So communication के साथ personality भी develop हो जाएगा, and everything would fall in place. This is what the advice I have. वाओ, थैंक यू सो मच प्रियंका, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड डेफिनेटली इतनी सारी एडवाइस जो आपने दी है डेफिनेटली सबको बहुत ही हेल्प करेगी। तो हमारा एक सेगमेंट होता है एंड इट्स अ सीक्रेट सेगमेंट, शायद अगर आपने एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा। रैपिड फायर करती हूँ मैं लास्ट में, तो डेफिनेटली आपके साथ ही, जो भी बताया नहीं था मैंने आपको। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको 5 सेकेंड्स के अंदर उसका आंसर करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके ओके, सो आर यू नर्वस? It's okay. It's okay. Okay, ready? Okay, so what movie do you enjoy quoting the most? Quoting the most. Mission Impossible. Okay. What All story do inclusive. you tell most often? I don't tell stories of any other people. I try to learn from my past, and I try to reinstate all the stories. Like I took the example of Veena. I should have done this. So obviously that is my story. So I relate to it more. Great. So who is your favorite Disney character? Disney character, Mickey Mouse. Okay. So what do you think? What is the meaning of life? Live, love, laugh. 3 L's in my life. You know, live it to the fullest, live your life to the king size, laugh out people. You get one day to laugh out, just have fun, enjoy each day and love. Spread love and positivity all around so that you get that love back also. That is the meaning of life for me. Wow. So which quotes resonates with you? Survival for the fittest. So obviously, those who can survive, they can only fit into this world. And for that, you need to skill up, groom up, and bring out the best in yourself. So definitely survival for the fittest is the favorite quote of mine. Okay. So if you get a superpower, supernatural power one day, suppose, then what is the one thing you would like to change in this world? I would like to make everybody good in communication skills. So that they can enhance into their life and they can actually grow. Because I majorly believe that communication is the key to success. Communication is the key to success. If you go to propose someone also, if you can't speak, you're gone. So similarly, you can understand everything, you need communication. So definitely I would love to take this opportunity to change the world a better place with better communicators, those who can establish themselves and make themselves successful and groom themselves. That's it. Great. So what is your one advice you would like to give to the women, especially about marriage? Adaptation is the name of the game. You cannot find the right guy. You'll have to make the right guy. Similarly, for women also, they cannot find us. We are not perfect as well. So why should we expect them to be perfect? You cannot get everything together. You'll have to adjust, adapt, sacrifice, and at the end of the day, be a giver rather than expecting from any relationship. Obviously, you have the right to expect. But if you try to, अगर आप एक glass में पानी लेते हो, and if the glass is half empty, the other person will try to fill it up. But if you're not filling up that level also, how do you expect the other person to pour down the water? So you need to balance up everything. So be a giver in life, everything will fall in place. And adapt, sacrifice, love, live, and laugh out. I'm sure that
You've got to have a rocking relationship. ग्रेट. सो थैंक यू सो मच प्रियंका. बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा शो रहा, मैंने बहुत ही इंजॉय किया. तो इफ यू हैव एनी फीडबैक अबाउट मी और मेरे शो को तो आप बता सकते हो. Pooja, first of all, the work that you're doing, I love it. Obviously, which is why I'm following you also. And like you, I have passion for personality grooming as well, as in the dresses and everything. You actually carry yourself so well. You speak so well. You bring in so good guests from whom we can learn also. So majorly, you are doing a great thing, and I have my best wishes, best support, and in all my terms with you, so that you are already growing. You have grown to a level. Obviously, you keep on growing more, and I'm sure you will rock, and you are rocking already, my friend. So there's so many things to Thank you learn so from much. you, and best wishes and lots of love from the core of my heart to you. Thank you Just so much, like Priyanka. Yeah, thank you so much for coming in the show, and it was an amazing evening. I hope you enjoyed the show, and बाकी सबको भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली. So let's meet someday, maybe possible. हम same city में नहीं है, but definitely one day I'll love to meet you in person. certainly. In person, I'd love to meet you. We can learn from each other, we can grow each other, and definitely would love to have a cup of coffee with you. Yeah, sure. Okay, bye bye Priyanka. Bye bye everybody. God bless. Yeah. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड. आई होप आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही और एपिसोड अगर आपको देखने हैं तो हमारा प्रीवियस एपिसोड आप देख सकते हैं टीना मैम के साथ अबाउट कम्युनिकेशन एंड अपीयरेंस. एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग.